Okay, so till the last session, we have started with preparation methods of alcohols, wherein we completed 4 of the preparation methods. To summarize, first was from alkyl halides, that is RX, which could be converted into ROH by heating or treating with hydrogen halides. ठीक है, उसी के अंदर we had the reaction of phosphorus trihalide PX3, phosphorus pentahalide जिसमें PCl5 stable होता है, and also thionyl chloride. These reactions were done in detail in the previous chapter of halides. ठीक है, second was the preparation by acid catalyzed hydration of alkenes. So Josefa, what is the difference between acid catalyzed hydration and hydroboration oxidation? So the first one gives secondary alcohol and second one gives primary. The first one gives you secondary or tertiary. Sorry. or tertiary alcohol, because there the addition of water takes place according to So Markovnikov's. Markovnikov's rule. And in the second case, hydroboration oxidation, it is kind of anti-MR or indirect anti-Markovnikov's rule, where the alkene gets converted into a primary alcohol. The best example is propene से अगर propane 2-ol बनाना है तो ACH वाला reaction apply करो, and propene से propane 1-ol बनाना है तो you apply the HBO reaction. And the fourth preparation method was by reduction. So there were 5 reactions in all, which I summarized in the form of statements. Lisha. Yes, sir. Tell me the 5 statements. The aldehyde is reduced to form 1 degree alcohol. Hmm. Ketone is reduced to form 2 degree alcohol. Hmm. Then acid is reduced to form 1 degree alcohol. Hmm. And ester is reduced to form 1 degree alcohol from R. And general alcohol from R dash. Super. You missed one statement at the start. The special case of aldehyde. The formaldehyde is reduced to form methanol. Perfect. Very good. Excellent. 5 statements on fingertips. You have to remember that's formaldehyde reduces to methanol, aldehyde reduces to primary alcohol, ketone to secondary alcohol, acid to primary alcohol and water, esters to primary alcohol from R, and general alcohol from R dash. That's it. So that completes the reduction of carbonyl compounds or a reaction. Now moving to the next and a very, very important reaction, that is by addition of Grignard reagent. Now, first of all, what is the formula of Grignard reagent? So MgCH3R, CH3Mg. CH3MgBr, or generally it is RMgBr, or any of the halide. Let's say bromide लेते हैं. So this is the alkyl magnesium bromide. ठीक है. Now Grignard की कुछ खास बातें before we start with the reaction. What is the polarity developed between R and Mg? R is more electronegative. R is more electronegative, so it acquires a partial Negative charge. negative charge, and here R पे negative charge है, मतलब it will act as a source of nucleophile. Perfect. So Grignard reagent is first of all an organometallic compound where carbon is bonded to a metal. Since carbon is more electronegative, the bond between carbon and metal will have carbon negative and Mg positive. So Grignard reagent on breakdown would always produce a carbon ion which will act as a source of nucleophile. Now this nucleophile will be added across the carbonyl group. So this is the addition of Grignard reagent with carbonyl group.
Okay, so carbonyl is represented as C double bond O. So what I'm writing here is general reaction. This is general reaction. This is Grignard reagent. Don't get confused. अब carbonyl में carbon and oxygen differs in electronegativity. Out of which is more electronegative? Oxygen. So it will acquire a partial negative charge. and carbon will acquire a partial positive charge. Now since there is addition reaction, so minus will get added to the Carbon. So minus जाएगा plus के पास, plus जाएगा minus के पास. This is how the simple addition takes place. Okay, and the Grignard reagent reactions are always to be carried out in dry ether. Otherwise, the moisture ka H will be combined with R and it can get converted into an alkane. So ये Grignard reagent add करने के बाद, now the carbon and oxygen would be joined by a single bond. Carbon will be added with, what part of Grignard is added to carbon? R. R. And O will be added with? MgPr. Perfect. तो सिंपली किया हमने कार्बोनाइल का डबल को सिंगल किया, R को यहाँ पर ऐड किया, MgPr को यहाँ पर ऐड किया. Now this particular compound formed is an intermediate of the reaction, and this intermediate is always named as a magnesium complex. It's an intermediate of the Grignard addition reaction, which is always named as Mg complex. अब ये complex जो intermediate है वो unstable होता है, so it is further broken down by the addition of water, and the addition of water is done in acidic medium in the presence of dilute HCl, यानी acid hydrolysis करते हैं. अब in this acid hydrolysis, what happens is MgBr वाला part always combines with OH of the water. MgBr combines with OH. तो यहाँ पर आपका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा Mg, which is divalent, तो Br and OH bonded to it. And this O minus will combine with the H plus of the water, and finally we'll get the product C, single bond OH with R. So the functional group being OH, matlab there is a formation of an alcohol. So if I generalize this reaction in the form of a statement, I can say carbonyl compound on addition with Grignard in dry ether first forms a Magnesium complex. which on Acidified hydrolysis with water produces alcohol and MgPrOH. perfect. In short, carbonyl with Grignard gives an alcohol, जिसमें intermediate Mg complex बनता है. अब now ये alcohol कौन से type का बनेगा? That will be decided by R, the two valences of the carbon and the alkyl group coming from the Grignard. Yes or no? बोलो. The type of the alcohol will be decided by the carbon की valences. So let's say these valences are R and R dash for the carbonyl group. इसको just to differentiate R double dash बोल देते हैं. तो अब this carbon is bonded to three alkyl group. One is R, other is R dash coming from carbonyl, and third is R double dash which is coming from Grignard. Correct? So now let's understand the different cases. Case 1. If the carbonyl group is formaldehyde. Now for formaldehyde, what are the two valences of carbon? H and H. H and H. Excellent. So I have HCH double bond O. Let's write the name. That is formaldehyde. And I add with the Grignard reagent, जिसको मैं generalize ही रख रहा हूँ, R double dash MgBr. ठीक है. अब first step में हमने addition किया in the presence of dry ether. The complex would be formed with two hydrogen bonded to this and followed by H3O plus. H3O plus मतलब acidified hydrolysis. Now can you tell me the final product now? By replacing the two
valences of the carbon. So ethanol. Not ethanol. Primary alcohol. It will be a primary alcohol. So R double dash के साथ CH2OH. Ethanol would be an example, but general अगर मैं बात करूँ तो it is giving you always a primary alcohol. बस बन गया आपका statement. Help me with the statement. Formaldehyde on बोलो. Grignard addition forms 1 degree alcohol. Perfect. Khatam. Formaldehyde on addition with Grignard gives a primary alcohol. Gives a primary alcohol. आ रहा है समझ में everyone? Now case 2, let's take an aldehyde. So for an aldehyde, what are the valences? R and H. R and H. So यहाँ पर I will take R C H double bond O. अब Grignard add करते हैं. R double dash MgBr. Can you guess what you will get? So 2 degree. 2 degree alcohol. Because यहाँ पर आपके पास R C के साथ एक H होगा, एक R double dash होगा and OH. So you are getting a secondary alcohol. Chalo, help me with the statement. बोलो बोलो बोलो. Aldehyde with Grignard addition gives second degree, 2 degree alcohol. Bas aldehyde with Grignard reagent addition gives a secondary alcohol. And now coming to the third case of a ketone. Ketone के लिए what are the two valences? R and R dash. R and R dash. And can you tell me the product now? Tertiary alcohol. Tertiary alcohol. Matlab case 1 gives you a primary, case 2 gives you secondary, and case 3 gives you a tertiary alcohol. So C with OH and 3 alkyl groups. 2 आ रहे हैं कीटोन से, एक आ रहा है ग्रिग्नार्ड से. Clear? So these are the 3 simple cases of the formation or the preparation method of an alcohol. ठीक है. और हर एक में करना क्या है? You have to just observe the valences and copy and paste. अगर primary alcohol है तो you have to just identify the alkyl of the Grignard and bond with CH2OH. अगर secondary alcohol है तो one will come from aldehyde, one will come from Grignard. Tertiary alcohol है तो 2 will come from ketone and third will come from the Grignard. That's it. Isn't it simple? Yes. Yes. So now orally मैं कुछ examples आपको पूछूंगा. You just apply the general reaction and tell me the product. Formaldehyde on addition with methyl magnesium bromide gives So ethanol. ethanol. Because the moment I say methyl, you copy this, you paste here, and you get CH3CH2OH, that is methanol. अब reverse में, if I want to prepare N-propyl alcohol, what should be the combination of reactant? So C2H5 MgBr. बस because N-propyl alcohol के लिए C2H5 वाला अल्काइल होना चाहिए. So ये C2H5 यहाँ पर पेस्ट करो और बैकवर्ड में आपका कॉम्बिनेशन होगा फॉर्मल्डिहाइड प्लस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक है क्रिश. If I want to prepare isopropyl alcohol, which case you will think of? Isopropyl. Case 2. And what are the two alkyl groups for isopropyl? Hello. Sorry.
Voice is too low. Siddhant? Yes, Dev? Yes, sir. It's methyl. Both of them are methyl. Perfect. So if this is methyl, which is the aldehyde name? Ethanol. 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 And this will be simply methyl magnesium bromide. हो गया. So ethanol plus methyl magnesium bromide will give you isopropyl alcohol. Added with sec butyl alcohol. Sec butyl. What are the two alkyl groups? Both of them are methyl only. ना ना ना. Sec butyl और isopropyl थोड़ी सेम होता है. Yeah, ब्यूटाइल so के लिए one 4 will कार्बन be होते हैं. one will be ethyl. One will be ethyl and other will be methyl. Now, for ethyl and methyl, there will be two combination of the reactions. Either R can be ethyl, R double dash can be methyl, or vice versa. Yes or no? Yes. So if R is ethyl, it will be propanol, and R double dash methyl will be the Grignard. And vice versa, अगर ये methyl लिया तो ये ethanol और ये ethyl लिया तो ethyl magnesium bromide. Either combination will give you the same secondary alcohol. Got it? बोलो. Yeah, sir. कॉपी पेस्ट एक बार समझ में आ गया ना, things are very very easy. Next, if I want to prepare a tert butyl alcohol, what will be the alkyl groups? Tert butyl. So all will be CH3, right? All will be CH3. So ये तीनों CH3 होगा, मतलब what is the ketone then? The simplest and the So first ethanol, ketone, not ethanol, Phenol. propanone, which is commercially called acetone. Dimethyl. डाइमिथाइल कीटोन. ये Yeah. सारे नाम भूल जाओ, एक नाम याद रखना है, एसीटोन. Propanone is correct, dimethyl ketone is correct, but most importantly, the commercial name acetone is important. ठीक है, तो acetone plus methyl magnesium bromide would produce a tert butyl alcohol. अब मान लो यहाँ पर आपका ethyl methyl methyl है, which is tert pentyl alcohol. तो आपके मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या तो ये इथाइल, ये दो मिथाइल, या इथाइल मिथाइल और ये मिथाइल रखो. इधर वेज बेसिकली 3 अल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है. Understood? So I have written the general reaction. Once you understand the 3 cases, then you have to just apply the R, R dash and R double dash, and जो भी आपका alkyl groups यहाँ पर आपने substitute किया है, general reaction में वैसे ही follow करो. यहाँ पे R, R dash आएगा और यहाँ पर भी R, R dash, R double dash, and you will get the type of the alcohol. ठीक है? Now, this reaction can prepare all the alcohols, meaning primary, secondary, and tertiary. But it will not be able to prepare one alcohol, which is that So methanol. methanol. क्योंकि जो पहला वाला अल्कोहल प्रिपेयर होगा, that will be ethyl alcohol. To prepare methyl alcohol, this R double dash should be H. और ये अगर H होगा तो Grignard reagent अप्लाई नहीं हो सकता. मतलब पहला point to be noted over here, this reaction will not be able to produce the first and the simplest alcohol, that is methanol. ठीक है? अब in the previous reaction, that is reduction of the carbonyl compounds, what type of alcohols were produced? If I combine all the 5 cases, So 1 and 2 degree.
प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वहां पर टर्शियरी अल्कोहल बनता ही नहीं था। मिथेनॉल बनता था, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, बट नॉट अ टर्शियरी अल्कोहल। मतलब टू प्रोड्यूस द टर्शियरी अल्कोहल यू हैव टू use the carbonyl ketone and Grignard combination only. समझा? तो this reaction produces primary, secondary as well as tertiary. मतलब सारे ही अल्कोहल प्रोड्यूस करता है. In short, except methanol, it can prepare all the alcohols. Clear? Now pay attention. If I want to prepare a cyclohexane with a OH and C2H5, can I prepare this alcohol using any of the three cases which I just discussed? Yes. Okay. Can you identify the type of alcohol? So it's a 2-degree alcohol. No. tertiary Cyclic alcohol. ring में type find करने के लिए just place a C over here. And now, can you tell me the answer? Tertiary. By placing a C, you can clearly see that the carbon is bonded with OH and 3 carbon, मतलब it's a tertiary alcohol. अगर ये tertiary alcohol है मतलब which case you should think about? Grignard reagent. Grignard reagent, and which case? Case 1, So the case 2 या third case ketone 3? one. The ketone one. But now the ketone which needs to be used should be RnR dash bonded. मतलब क्या? Cyclic. बस मतलब you have to use a cyclic ketone of 6 carbon atoms. What is the name of this ketone? Cyclohexanone. Very good. तो अगर आपने साइक्लोहेक्सेनोन यूज किया और ग्रिग्नार्ड कौन सा यूज करेंगे वो तो क्लियरली दिख रहा है. You should use a Grignard of Ethyl magnesium. ethyl. Ethyl magnesium bromide. Now do the reaction as per the general reaction, and the cyclohexane and ethyl magnesium bromide will give you the 1-ethyl cyclohexane 1-ol wala product. Getting it? समझा? Yeah, sir. बस ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, बाकी तो ओरली मैंने आपको एग्जांपल्स बताए. एंड प्लस नाउ व्हाटएवर आई गिव इन असाइनमेंट्स, प्लीज प्रैक्टिस द रिएक्शंस. ठीक है? Now this covers the preparation methods of alcohols. Total 5 preparation methods है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए. अब उसको समराइज करके याद रखने का एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ. And to remember the preparation, it's to be remembered as AH twice. घर, घर के ऊपर roof, and the roof is made of akai. AH twice, घर, घर के ऊपर roof and akai. So what's that? First of all, AH twice means alkaline hydrolysis of alkyl halide. Alkaline hydrolysis, yani aqueous KOH of alkyl halide. तो RX plus aqueous KOH alcohol दे रहा था. That's first reaction. Yes? बोलो. Yeah, sir. Then HA, घर का जो HA है, that is hydration of alkenes. अब hydration of alkenes में दो cases थे. One was acid catalyzed hydration, that's ACH, and the other was Say HBO.
HBO, that is hydroboration oxidation. In ACH, it followed the Markovnikov's addition, which generally produces secondary या tertiary alcohols. And HBO के केस में indirect anti-MR follow हो रहा था, जो generally आपको primary type के alcohols देगा. ठीक है? And then we had reduction of aldehyde, ketone, acid and ester, जिसके 5 statements मैंने बताए. So aldehyde में 2 cases थे, that is formaldehyde and general aldehyde, then ketone, acid and ester, तो reduction of अकाई हो जाएगा. And last में हमने देखा Grignard reagent with the aldehyde ketone. तो उस केस में acid और ester का addition नहीं होता है, because they are stable compounds stabilized by resonance. इसलिए ग्रिग्नार्ड के केस में ना अकाई में से सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन के 3 केसेस हमने डिस्कस किए. द मोमेंट आई से अल्डिहाइड मतलब 2 केस, फॉर्मल्डिहाइड और जनरल अल्डिहाइड, एंड देन कीटोन का. तो केस 1, केस 2, केस 3. तो आप रिएक्शन प्रिपरेशंस को आप देखोगे ना, इट इज वेरी वेरी सिंपल टू रिमेंबर. 5 प्रिपरेशन आपके सामने है. First is alkaline hydrolysis of alkyl halide, hydration of alkene via ACH and HBO, then the reduction of अकाई जिसके 5 statements आपको ध्यान में रखने हैं, और ग्रिग्नार्ड reagent के 3 cases याद रखने हैं. हो गया? Clear? Fine. Yes. So this way you can remember the preparation methods in a very simple manner. Chalo. Next. One more additional reaction, epoxide. Epoxide, we have seen that cyclic ether with carbon, oxygen, carbon in the cyclic ring reacts with Grignard reagent followed by acidic hydrolysis to give primary alcohol. I'll just show the reaction once again over here. So this is the epoxide, also called, one more name was there. Epoxides are also called oxirane. Epoxides are also called oxirane. And epoxides are added with the Grignard reagent in dry ether and followed by hydrolysis. मैं आपको साथ में बता रहा हूँ. तब क्या होता है? Grignard breaks down as minus and plus, and this carbon oxygen bond is polarized because of the difference in electronegativity. So Grignard with a negative charge attacks the carbon with a positive charge. अब जैसे ही अटैक करता है, this bond breaks down and the ring opens up. जो ring close chain में था वो open up हो जाता है. अब open होने के बाद this R bonds to CH2 and this oxygen and forms R CH2O minus. ठीक है, R के साथ CH2O minus. अब पानी से जब हाइड्रोलाइज होता है तो पानी का H+ यहाँ पर ऐड हो जाता है और ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल. प्लस बाई प्रोडक्ट में Mg के साथ X and OH. मतलब इपोक्साइड जब ग्रिग्नार्ड को ऐड होता है तो इट गिव्स यू अ प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, एक एग्जांपल सोचो. इफ द R इज मिथाइल, व्हाट इज द प्रोडक्ट? If R is methyl, what is the product? Propane 1-ol. Propane 1-ol. So we had the Grignard reagent with 1 carbon, but the primary alcohol which we are getting is with how many carbon? 3. 3. Matlab there is an increase of how many carbon? 2. So ऐसा रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है आर एग्जांपल्स ऑफ ascending of series. Ascending मतलब नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट में बढ़ेगा. ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन घटेगा. Those would be called Descending of series. perfect.
ठीक है, आ रहे हैं समझ में? Yes. So this is one additional reaction to prepare alcohol from epoxide. Now, after the completion of alcohol's preparation, we move to the phenol preparation. The first preparation method of phenol is from chlorobenzene. Chlorobenzene. तो अब phenol को हमें prepare करना है, and the raw material or the starting reactant used is chlorobenzene. अब chlorobenzene से phenol बनाने के दो reactions हैं. Let's first start with the first one. So chlorobenzene here is treated with NaOH, that is alkaline medium. 6 to 10% of NaOH के साथ react किया, and it is heated to a high temperature of 623 Kelvin at a pressure of 150 atmosphere. Now यहाँ पर अगर reactions देखोगे तो they are carried out at a high temperature and a high pressure. There is a reason to it. जब हमें phenols बनाना है तो we are using the aryl halides. और अराइल हैलाइड्स में अगर हम बावा ऑर्डर को देखें तो आई ऑलवेज से विनाइल एंड अराइल आर, क्या बोलता हूं मैं, विनाइल एंड अराइल आर sp2. हाँ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दे आर द यूजलेस रिएक्टेंट्स, बिकॉज जब यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा तो इट विल फॉर्म अ विनाइल और अराइल कार्बोकटाइन, और वो वाले कार्बोकटाइन्स बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, because there the positive charge is on the sp2 carbon which is very unstable. In short, अगर ये वाले intermediates बनते हैं, इसका मतलब इस bond को तोड़ना इतना favorable नहीं है, or in other words, this bond is very very strong and we would require high temperature and high pressure conditions in order to break this bond. और एक बात यहाँ पर, this lone pair of the chlorine is in resonance, और resonance होने की वजह से यहाँ पर this single bond will change to, a single bond will change to So double. अब single versus double में कौन से bond को तोड़ना ज्यादा एनर्जी लगेगा? So double. तो ये दूसरा रीजन है कि ये CCl बॉन्ड तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट इन द CCl बॉन्ड. इन शॉर्ट, जो हैलोअरीन्स होते हैं, यानी क्लोरोबेंजीन या जनरली हैलोअरीन्स, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, and because of the low reactivity and difficulty in breaking the bond, they are to be treated at a high temperature and a high pressure. समझ में आया रीजन? Yes or no? Yeah. Hello. Okay. So we have the chlorobenzene. I am treating with NaOH at high temperature and high pressure. तो मैंने आपको रीजन बताया है कि high temperature, high pressure यहाँ पर क्यों लगता है. Once you understand this, then it's very very simple. ठीक है, to remember the temperature and the pressure. So now under these conditions, first of all, the OH and H eliminates as So water. The Cl combines with Na to immediately form a sodium chloride. sodium chloride. And अब क्या बचा? ONA. और ये ONA जाके bond करेगा on the benzene ring. So we are getting ONA, that's O minus Na plus, bonded with the benzene with the byproducts NaCl and H2O. And this particular compound is named as sodium phenoxide. Phenol का salt बोल सकते हैं, which is named as sodium phenoxide. अब next step में इसको phenol में convert करने के लिए
we add dilute HCl. Sodium phenoxide is added with dilute HCl. So on addition with dilute HCl, basically acidification कर रहे हैं. NaCl के साथ निकल जाएगा as NaCl, and the O minus will combine with the H plus to convert it into phenol. So sodium phenoxide can be converted into phenol by acidification. So that's the first preparation of phenol from chlorobenzene. Simple. Yeah. And this particular reaction of chlorobenzene to phenol is called Dow's process. Dow's process. DOWS. Dow's process. ये सेम कन्वर्जन हम एक और रिएक्शन से कर सकते हैं. That is, again the starting material or the starting reactant is chlorobenzene, and here it is directly added with a highly heated steam. That is water heated to a temperature of 698 Kelvin in the presence of calcium phosphate or silica as catalyst. Calcium phosphate या silica. Okay, so this highly heated steam will be breaking down as plus and minus. The H plus will be carried away with Cl minus to form HCl, and the Cl will be substituted by OH, converting the chlorobenzene into phenol. तो सेम कन्वर्जन है, लेकिन ये डायरेक्ट वन स्टेप में हो जाता है, and it requires a very high temperature of 698 Kelvin. और ये जो कन्वर्जन है इसको बोलते हैं रेशिक्स प्रिपरेशन या रेशिक्स मेथड. अंडरस्टूड? Yeah, sir. ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस जो है यू नीड टू प्रैक्टिस इट. विदाउट प्रैक्टिस आपको याद नहीं रहेगा. So whatever assignment I'm giving on daily basis, please complete that. ठीक है, so एक बार फिर से देख लो. From chlorobenzene, the conversion is two-step, and that's Dow's process. And Reschig's process में single step में conversion होता है. दोनों ही केस में there is a nucleophilic substitution reaction where the chloro is substituted by OH. तो दोनों ही NSR फॉलो करता है. Then coming to the second preparation method, that's from cumene. Now cumene is the commercial name of isopropyl benzene. Cumene is the commercial name of isopropyl benzene. Okay, so we have CH3, CH, CH3 isopropyl and bonded to the benzene ring. ये हो गया क्यूमीन का फॉर्मूला. This is the starting reactant. Now to convert it into phenol, it is first oxidized with oxygen. So यहाँ पे air oxidation होता है, and this oxidation is carried out by heating to 498 Kelvin in the presence of cobalt naphthenate as catalyst. Cobalt naphthenate, the salt of naphthalene or naphthol. Okay, so 498 Kelvin in the presence of cobalt naphthenate, it is heated, and now the two oxygen atom gets added between the carbon and oxygen. मतलब ये पूरे स्ट्रक्चर में C और H के बीच में दो ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं, and we get COOH and the entire structure remaining as it is. Now tell me, what is the oxygen-oxygen linkage called? Peroxide linkage. Peroxide. So this particular compound is called cumene का peroxide. और क्योंकि ये peroxide हाइड्रोजन को बॉन्डेड है, इसको हाइड्रोपेरोक्साइड बोलते हैं. तो नाम भी समझ के आपको आइडेंटिफाई करना है, so that there is no need of bugging up. Cumene on air oxidation gives you cumene hydroperoxide. Now this hydroperoxide is decomposed by heating with dilute sulfuric acid,
एसिडिक मीडियम में हीट किया जाता है इसको, और अब जैसे ये हीट करते हैं तो ये डीकंपोज हो जाता है, एंड ऑन डीकंपोजिशन इट ब्रेक्स डाउन एंड सेपरेट्स दिस मॉलिक्यूल. कैन यू ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल नेम? Acetone. वेरी गुड. वी आर गेटिंग एसीटोन एज अ बाई प्रोडक्ट. और बचा क्या अपने पास? OH और बेंजीन. ये दोनों आपस में मिल जाएगा, एंड हियर वी आर विद द प्रिपरेशन ऑफ phenol. So from cumene there is air oxidation followed by decomposition. And इस reaction में we are getting a very important byproduct, that is acetone, जो commercial level पे बहुत सारे processes में use होता है. That is why, since we are getting the important industrial byproduct, this particular preparation method is used on a large scale to prepare phenol. Hence, it is named as commercial method of phenol preparation. Okay? So why are we using naphthalene? Cobalt naphthenate is used as a catalyst to speed up the reaction. यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो ऑक्सीजन का एडिशन है ना, just to make sure that they are added between this benzylic carbon and hydrogen, cobalt naphthenate is used. Because there could be other byproducts जहाँ पर ये C और H के बीच में भी ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, यहाँ पर भी ऐड हो सकता है. So there are a lot of other byproducts which could be formed. So to avoid that, we are using cobalt naphthenate. It manages the path in such a way that we are getting a higher yield of this cumene hydroperoxide. Understood? Yeah, sir. Next, third preparation method is from benzene sulfonic acid. What would be the formula of this sulfonic acid? So SO3. SO3H. तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का मतलब होता है SO3H bonded to the benzene. अब इसमें 3 स्टेप रिएक्शंस है, लेकिन इसका 2 स्टेप जो है वो डाउस प्रोसेस के जैसा ही है. ठीक है, तो पहला स्टेप जो है इट्स एन एसिड. एसिड है तो इसको बेस से Pr, सो बेस के साथ रिएक्ट कर लो. बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज एन एसिड, तो बेस के साथ रिएक्ट करो. नाउ एसिड एंड बेस विल अंडरगो So न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर एसिड का H एंड बेस का OH will eliminate as water and will get the salt as SO3Na. Now एसिड का जो सॉल्ट बनता है उसमें एक एसिड को रिप्लेस करके ATE लगाते हैं. तो कैन यू नेम दिस सॉल्ट? sodium benzene sulfonate. बस मैं वही बोल रहा हूं, आपको कोई भी नेम्स मगअप नहीं करना है. आपको पता है कि नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट बनता है, तो सल्फोनिक एसिड का सल्फोनेट बनेगा. बिग डील, सिंपल है ये. सो इट विल बी फॉर्मिंग सोडियम benzene sulfonic acid will change to sulfonate. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब जो 2 स्टेप्स है वो डाउस प्रोसेस के जैसे है. तो डाउस में हमने क्या किया था, NaOH के 2 मोल्स लिया था, and there it was heated at 623 Kelvin. Here they are fused together at 573 Kelvin. because ये ऑलरेडी सॉल्ट है तो टेम्परेचर थोड़ा सा कम लगता है. ठीक है, अब यहां पर भी the OH and H will eliminate to give OH and H will eliminate to give So H2O and it will form ONA on the top and then Na. Yeah. बोलो बोलो क्या होगा बाई प्रोडक्ट? So Na will react with SO3. SO3Na, तो क्या हो गया कंबाइन? So Na2SO3. Sodium What's the sulfate. name? सल्फाइट. Fight. परफेक्ट, सोडियम सल्फाइट. तो देखो डाउस के जैसा है कि नहीं. Na2SO3 गया, H2O गया, एंड नाउ ONA मिल गया.
रिंग पे. What was the name of this ONA? So sodium phenoxide. सोडियम फिनॉक्साइड, ऑल्सो कॉल्ड सोडियम फिनेट, क्योंकि ये फिनॉल का सॉल्ट है, इसको फिनेट भी बोलते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन करना है, तो सेम स्टेप, एडेड विद डाइल्यूट HCl, एसिडिफाई किया, Na और Cl निकला, एंड O- के साथ H आ गया टू गिव फिनॉल एज द फाइनल प्रोडक्ट. खत्म. सो फर्स्ट स्टेप न्यूट्रलाइजेशन, बाकी दो स्टेप डाउस जैसा, प्रिपरेशन तैयार. क्लियर? Understood. Yes. Up fourth one. Fourth one is from aniline. What's the formula of aniline? So NH3, NO2. NO2 तो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा. Aniline is amine. Phenol with NH2 Phenol with NH2. means benzene with NH2 on the ring. हाँ. Benzene with NH2. मतलब बेंजीन पे NH2 है, तो that's given a commercial name of aniline. तो ये हो गया अपना starting reactant, aniline. अब इसमें भी दो स्टेप का रिएक्शन है. तो फर्स्ट स्टेप में एनिलीन इज ट्रीटेड विथ HON डबल बॉन्ड O. अगर इसको कंबाइन करके देखो तो इट्स HNO2. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? Nitrous nitrous. acid. Nitrous acid. HNO2 is nitrous acid, and if we had used HONO2 then it would be nitric acid. अब जैसा नाइट्रिक एसिड स्टेबल है, वैसे नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल. और कोई भी रीएजेंट अगर अनस्टेबल होता है तो हम उसको डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते. सो वी हैव टू याद करो, जब PbR3 और PI3 बताया था मैंने, तो वो अनस्टेबल थे, तो डायरेक्ट तो अवेलेबल नहीं है ना, तो उसको हम क्या करते हैं? Prepare it in situ. प्रिपेयर इट ड्यूरिंग द रिएक्शन विच वाज कॉल्ड इन सीटू. तो नाइट्रस एसिड का भी वही फंडा है कि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल है, लैब में आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो उसको रिएक्शन के टाइम पे प्रिपेयर करना पड़ता है. तो रिएक्शन के टाइम पे इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग NaNO2 and dilute HCl. NaNO2 is called sodium Sodium Nitrite. nitrite. NaNO2 is sodium nitrite and NaNO3 would be sodium nitrate. तो ये सोडियम नाइट्राइट और डाइल्यूट HCl में क्या होगा? Na और Cl निकल जाएगा, HNO2 इन C2 बन जाएगा. सिंपल सा फंडा. बट एक और चीज, नाइट्रस एसिड इज वेरी मच स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर. अगर हाई टेम्परेचर यूज किया तो वो वापस डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. इसीलिए दिस इज टू बी prepared at a low temperature of 273 Kelvin. तो देखो रीजंस बताया. नाइट्रस एसिड HNO2 होता है, अनस्टेबल है तो इन सीटू बनाना पड़ता है फ्रॉम NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl. टेम्परेचर लो रखना पड़ता है क्योंकि हाई पे वो टूट जाता है, तो 273 Kelvin. So conditions are justified and the reaction is to be carried out in acidic medium. तो हम डाइल्यूट HCl को एक्सेस में लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन. अब क्या होगा? दिस H2 of the aniline takes away the O to form N2Cl. हाँ, एक तो बाई प्रोडक्ट मिला H2O, OH और H वापस निकलेगा H2O, एंड नाउ नाइट्रोजन नाइट्रोजन और Cl कंबाइन करके बनाएंगे N2Cl. मतलब द प्रोडक्ट विल बी NCl bonded to the benzene, and the nitrogens would be joined by double bond and a coordinate bond with plus and minus. Byproduct में twice of H2O. समझा? Yeah. Now this particular compound is named as benzene.
दो नाइट्रोजन के लिए डाइअजोनियम एंड क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, बिकॉज दो नाइट्रोजन एटम्स को डाइअजो बोलते हैं और ये एक सॉल्ट है, इसलिए डाइअजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बोलते हैं. सो दैट्स द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन. अब ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब एडेड विथ वाटर, एंड दिस इज इन द एसिडिक मीडियम. वंस अगेन एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. Now diazonium chloride में this 2 nitrogen atom is a good living group, मतलब ये reaction से बहुत easily निकल जाते हैं. So this 2 nitrogen will be evolved off in the form of N2 gas. The Cl minus will be combined with H to form HCl, and now the OH will be bonded to the benzene, giving you phenol. That's the preparation which converts aniline into phenol. Understood? Yeah. ठीक है, तो एक बार फिर से प्रिपरेशंस देख लो. फर्स्ट इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसमें दो रिएक्शन था, डाउज एंड रेशिक्स. डाउज एंड रेशिक्स. उसके बाद क्यूमीन से फिनॉल थ्रू एयर ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय डीकंपोजिशन. देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू, और फिर एनिलीन. ठीक है, तो ओवरऑल 5 प्रिपरेशन मेथड्स है. वंस अगेन समरी और याद रखने का तरीका, YRKT याद रखने के ट्रिक्स. तो फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड्स कुड बी रिमेंबर्ड एज डॉक्टर कैब्स. डॉक्टर कैब्स. So can you identify the letters now? D for Dow's process. Dow's process. R for Rashid's process. Rashek's process. C is from Cumene. cumene. A will be from Aniline. aniline, and BS as a whole will be from benzene sulfonic acid. हो गए नाम याद, रिएक्शन प्रैक्टिस करो, ओवरऑल सारे प्रिपरेशंस आपके दिमाग में क्लियर. ये न्यूमोनिक्स लिटरली बहुत काम आते हैं टुवर्ड्स द एंड, जब बहुत सारे रिएक्शंस हो जाएंगे तो इट इज डिफिकल्ट कि कौन सा रिएक्शन किसके प्रिपरेशन के लिए था. बट ये न्यूमोनिक अगर याद रखा तो तुरंत स्ट्राइक हो जाएगा कि फिनॉल के प्रिपरेशंस में डाउस, रेशिक्स, क्यूमीन, एनिलीन और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के थ्रू फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड्स थे. Got it? Yeah, sir. Okay. Okay. So after the preparations of alcohols and phenols, we'll be moving to physical properties of alcohols and phenols. So physical properties दोनों का discuss साथ में किया है because their functional group is common, having both of them OH. So now nature of intermolecular forces. If I talk about alcohol, that is HO with R, या फिनॉल रहेगा तो HO के साथ फिनाइल ग्रुप रहेगा. ठीक है, so both alcohols and phenols, because they have the OH group, it will be having the polarized hydroxy group because of the difference in electronegativities. Now if I have multiple
molecules from the same type, then what type of intermolecular forces will you observe between them? So won't this be hydrogen bonded? It will be hydrogen bonding, because H bonding का condition ही क्या था? The hydrogen should be bonded to So phone. 4. The most electronegative element like fluorine या फिर उससे ज़्यादा उससे कंपैरेटिवली कम ऑक्सीजन या नाइट्रोजन. इन शॉर्ट मैंने क्या बोला था? हाइड्रोजन जब भी फोन के साथ बॉन्डेड होगा हमेशा द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी H bonding. So the nature of intermolecular forces would be H bonding, and H bonding is very very strong intermolecular force. अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स वुड बी So very high. very high, and this would affect the other physical properties like So boiling point, melting point. boiling point, melting point. ठीक है, तो physical state is also a consequence of the intermolecular forces only. The molecules which have weaker intermolecular forces would be gaseous, little bit stronger would be liquid, and बहुत ज़्यादा strong forces of attraction होगा तो it will be solids. ठीक है, तो most of the alcohols are colorless liquids, and as we move with the higher number of carbon atoms, the intermolecular forces become stronger and they are found to be solids. ठीक है, फिनॉल में द ग्रुप विच इज बॉन्डेड टू द OH इज ऑलरेडी बल्की, इसीलिए वो भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. दैट्स अबाउट द फिजिकल स्टेट. And then boiling point, as I already discussed, that it is going to be dependent on intermolecular forces of attraction. ठीक है, अब अगर मैं कंपैरिजन करूं, इफ आई हैव मिथेनॉल, इथेनॉल, propanol and butanol, which is going to have a higher boiling point? Butanol. Because boiling point will increase with the increase in Molecular mass. molecular mass. That's point 1. But अगर मेरे पास butanol के ही isomeric alcohols हैं, जिसके 4 isomers होते हैं, N-butyl, isobutyl, sec-butyl and tert-butyl, then which mnemonic do you apply to understand the order of boiling point? So total have the least What's concept? so surface area. Surface area. तो मैंने BDB बोला था ना? What's that? Branching decreases Decreases boiling point. So N iso से sec tert की तरफ the branching increases, and जितना ज्यादा branch होगा molecule compact हो जाएगा, surface area कम हो जाएगा, surface forces कम हो जाएंगे, और उसके basis पे the boiling point will also decrease. तो boiling point में जब भी comparison आए तो दो चीज याद रखो. One is, if the number of carbons are different, you have to just compare with the molar mass, and if the carbons are same and the isomers are to be compared, BDB ka rule, which says that branching will decrease the boiling point, and the order of boiling point in that case would be primary will be more, then secondary, and then tertiary. So now have a look at this table of boiling and melting points. So if we just compare methanol, ethanol, N-propyl alcohol, isopropyl alcohol, ठीक है, तो पहले तो कार्बन के हिसाब से देखें तो the least boiling point is of methanol, फिर उससे ज्यादा ethanol, उसके बाद इन दोनों में this is primary and this is secondary. With BDB rule, primary should have a higher, so आप देख रहे हो 97 and 83. उसके बाद N iso sec tert isomeric butyl alcohols है, उसमें 118, 108, 99.5 और 83. BDB का rule apply करो, you get the concept. Then phenol, because of the higher molecular mass with respect to phenyl group, will have a very high boiling point. तो इसका boiling point आप देख सकते हो, it's 182
much higher than the alcohols. Then अगर कोई substituent आ जाता है like methyl या फिर nitro, then the boiling point would be higher because इसमें molar mass तो बढ़ ही रहा है. So there is 202 and 217. अब solubility का concept क्या है? As the molecule becomes more and more compact, more and more compact, the solubility will decrease. Molecule compact होगा तो solubility decrease होगा. How is solubility and molar mass first of all Directly, compared? cell increase. Increase होगा ना, क्योंकि solubility में molecule जितना छोटा रहेगा पानी के साथ उतना association अच्छा रहेगा और वो ज्यादा dissolve करेगा. तो आप simple पहले दो को देखो, methyl versus ethyl alcohol. Methyl alcohol is having more solubility of 793 per 100 gram of water as compared with ethyl alcohol जिसका 789 ही है. ठीक है. And melting points अगर order देखोगे तो these alcohols have really low melting point in the negative temperature range. That's minus 97 degrees Celsius for methyl alcohol. फिर जैसे जैसे molar mass बढ़ता है तो melting point बढ़ रहा है. Phenol as a solid melts at a temperature of 41 degrees Celsius. यानी room temperature से थोड़ा high temperature रहेगा तो they all will be converted into liquid state. ठीक है. So this is how you have to read the table. Values कभी भी कोई पूछेंगे नहीं आपको, लेकिन अगर कोई comparison आता है इस तरह से, then you have to answer it as per the molar mass और branching वाला concept to be applied. Understood? Yes. Fine. So I'll stop here for today. I have completed with preparations of alcohol, preparation of phenols, and the physical properties of alcohols, phenols with 3 of the important criterias or the parameters. In a nutshell, preparation of alcohols के लिए AH square, घर, Akai, and preparation of phenols के लिए Dr. Caps. You know all the preparations then. Fine. Yes, sir.